morning, children. Today we are going to do chapter 8 action words. In the last session we had done what are action words. Now everybody open your grammar textbook, page number 5555, and chapter 8, and chapter name is what? Action words. Say this rhyme with your friends. Do the action for each action word. Now you can see over here few girls and boys are there. Over here group of girls and boys are there. Now here we have to read the rhyme, say the rhymes, and we have to do the actions. Wow, that's wonderful. Hop here, jump there. Hop here, jump there. Come here, go there. Come here, go there. Smile a little, laugh a lot. Walk away, trot, trot. Scream a little, sing a lot. Put your hands together and clap a lot. So dear children, this is a poem. You can see so many actions are there over here. Hop here, jump here, it is one type of action. Come here, go there. Again they are calling and sending you back. Smile a little, laugh a little. Walk away, trot, trot. Scream a little, sing a lot. Put your hands together and clap a lot. Now underline each action words. Over here what we have to do? We have to underline the action words. The words you have underlined are called action words. The words which are underlined are called action words. Hop, jump, come, go, laugh, walk, scream, sing, clap. So all these are what? Action words. Action words are the words that describe actions. They tell us what people, animals or things do. They are also called doing words. What are action words? Action words are the describing, they describe the action. जो हमें action लोग describe करते हैं. They tell us, वो हमें बताते हैं what people, animals or things do. What people, animal or things do, क्या करते हैं. They are also called doing words. उसे हम क्या कहते हैं? Doing words. These are some action words. These are some action words. Play, wag, talk, read, smile, do, see, teach. These are called action words. Now we'll go to the next page. Let's practice. Page number 56. Match these action words. Match these action words with the correct picture. One has been done for you. Now over here you can see your words are given, your actions are given. We have to match with their words with their action. First one is done. E-A-T, eat. So it is an action of eat. What it is? It is an action of eat. So already it has been done. B, push. P-U-S-H, push. So can you help me out, children? Where is the picture of push? Come on, come on. Yes, this is the picture of push. Cook. C-O-O-K, cook. So we'll draw the line over here. Father is cooking. This is action of cooking. Cry. C-R-Y, cry. The boy is crying. So it's cry. The boy is crying. Pull. Here what the boy is doing is pulling something out. So it is a pull. Now act out the following action in front of the class. What you have to do? We have to act out the following action. Stand. Here you can see S-T-A-N-D, stand. R-E-A-D, read. S-M-I-L-E, smile. So here is the action. You have to show off action of stand, read and smile. Now next. Page number 57. P-I-C-K, pick. S-I-N-G, sing. S-I-T, sit. All these are called action words. What are called these?
action words. These are called action words. Now we'll do the exercise. Circle the action words. Circle the action words in the sentence below. One has been done for you. We have to circle the action words. One number. I see a little bird. Over here you can see SEEC is an action. We have circle over here. I see a little bird. B. The bird is singing on a tree. So what the bird is doing is singing. So is singing is what? An action. I talk to the bird. So talk is an action. The bird comes to me. COMES, comes is an action. The bird eats a piece of bread. So eats, 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 it's an action. The bird eats a piece of bread. Fill in the blanks using the action words given below. One has been done for you. Now over here blanks are given. In the bracket words are given. Sleep, run, watch, eat, push, write, laugh, drink. All these are words and these are called action words. Now we have to write these action words in the blanks given below. Write 5 words about your friends. So WRITE, write. Write is an action. So write 5 words about your friend. B number. We do not dash each other when we stand in a line. So it is what? Push. Push is an action. PUSH, push. Push is an action. We do not push each other when we stand in a line. Now next page. Page number 58. 58. I dash a lot when I dash cartoon. So what? I laugh. LAUGH, laugh a lot when I watch cartoon. So watch is what? Action. You seen a cartoon on the TV and you laugh when it is a comedy scene is going on. So these are action. I sleep on time every day. Sleeping is also one type of action. It is a sleep. I sleep on time every day. I love to eat popcorn and drink juice. I love to eat what? Popcorn and drink juice. So eating, come on, we do the action, right, of eating, and juice we drink. So that is also one action, drink. Run fast or you will miss the bus. Run fast or you will miss the bus. This is also one type of action. So children, did you see what action words we have learned? We learned write 5 words about your friends. So 5 is what? Write is what? Action words. We are doing some action. We are showing the action of writing. We do not push each other when we stand in a line. So push is also an action. It is showing something that is a push. So it is an action. I laugh. Laugh is what? When you laugh when you see a funny movie or funny thing or cartoon. When you watch. So fun, laugh and watch is what? A action. Laugh यानी हंसना, watch यानी देखना. अब जब कॉमेडी चीज़ कभी आप देखते हो तो आपको हंसी छूट जाती है, आप बहुत ही हंसते हो, तो वो आपका एक एक्शन है. स्लीप ऑन टाइम एवरी डे, राइट. यू शुड स्लीप अर्ली सो यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो स्लीप जो है वो एक एक्शन है, वो हमें एक्शन बताता है. आई हैव टू ईट, आई लव टू ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक जूस. ईट और ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक इज़ वॉट? एक्शन. ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी आप जूस पीते हो, मिल्क पीते हो, पानी पीते हो, उसका एक्शन होता है. रन फास्ट और यू विल मिस द बस. रन यानी दौड़ लगाना, आप भागो फास्ट नहीं तो आपकी
बस मिस हो जाएगी। आप दौड़ो नहीं तो आपकी बस मिस हो जाएगी। सो दिस आर व्हाट एक्शन। यूज द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो वर्ड्स है हमें एक्शन वर्ड्स कहते हैं, उसे हमें अपने सेंटेंस में लिखना है। फर्स्ट दिया गया है जंप, JUMP, जंप। आई लाइक टू जंप वेरी हाई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन हो रहा है जंप की। तो सेंटेंस क्या बना है? आई लाइक टू जंप वेरी हाई। बी सिट, वी सिट इन ए बिग क्लासरूम। सिट इज़ एन एक्शन, तो हम बड़ी क्लासरूम में हम बैठते हैं। वी सिट इन ए बिग क्लासरूम। फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स जो है स्काई में क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पुल, पुल ए चेयर, पुल ए चेयर। थ्रो, थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन। थ्रो इज़ एन एक्शन, कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो वो एक्शन कहलाता है। तो थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन। सो फर्स्ट आई लाइक टू जंप वेरी हाई। सिट, वी सिट इन अ बिग क्लासरूम। फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पुल, पुल अ चेयर। थ्रो, थ्रो द पेपर इन द डस्टबिन. Now write 3 sentences on what you do every morning before coming to school. We have to write down 3 sentences what you do every morning. So first, I brush my teeth. When you get up in the morning, what you do? You brush your teeth, right? You have a bath. You become clean, neat and clean. Then I drink milk. I pack my bag. So children, you can see over here, brush, drink and pack. All these 3 are what? Action. हम टीथ किस हिसाब से करते हैं? ब्रश करते हैं, राइट। मिल्क हम ड्रिंक करते हैं और बैग जो है हम पैक करते हैं। लेट्स लर्न। एन एक्शन वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल विदाउट एक्शन वर्ड, ए ट्रेन फास्ट। ए ट्रेन फास्ट, ये कोई सेंटेंस बना? समझ में नहीं आया। लेकिन विथ एक्शन के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए ट्रेन रन्स फास्ट। ए ट्रेन रन्स फास्ट। ट्रेन जो है वो बहुत ही फास्ट भागती है। My mother cakes, right? Without action word. With action word हम क्या बोलेंगे? My mother bakes cake. मेरी मम्मा जो है वो केक बहुत अच्छा बनाती, बेक करती है। I a bicycle to school. Without action word. और with action what will you say? I ride a bicycle to a school. अभी I a bicycle to school समझ में आया? सेंटेंस नहीं। बाइसिकल है, स्कूल है, वो किस तरह से है। लेकिन जब हम एक्शन वर्ड ऐड करते हैं, आई राइड ए बाइसिकल टू स्कूल, तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। सो विथ एक्शन वर्ड विल रीड, ए ट्रेन रन्स फास्ट। ए ट्रेन रन्स फास्ट। माई मदर बेक्स केक्स। आई राइड ए bicycle to school. Now next page. Let's practice. Correct this sentence by putting in action words. One is done for you. We have to correct the sentence while putting the correct actions. Monkey from trees. Now you can see monkeys from trees. लेकिन monkeys from tree क्या करते हैं? Monkeys swing from tree. तो स्विंग जो है यहाँ पे हमने एक्शन यूज़ किया है, मतलब यहाँ से वह जंप करते हैं। हॉर्सेस वेरी फास्ट, तो हॉर्सेस क्या करते हैं? हॉर्सेस रन वेरी फास्ट। हॉर्सेस रन वेरी फास्ट। फिश इन द लेक, तो फिश इन द लेक क्या करते हैं? तो फिश स्विम इन द लेक। आई इन द पार्क,
अभी आप पार्क में क्या करते हो? आई प्ले इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क. बर्ड्स इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में क्या करते हैं? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. अभी हम एक साथ में सब सेंटेंसेस बोलेंगे. मंकीज स्विंग फ्रॉम ट्रीज, horses run very fast, fish swim in the lake, I play in the park, birds fly in the sky. Now we will go to another exercise. Can you make funny sentences like this one below? अभी हमें sentences बनाने हैं. Elephants dance on ice. एलिफेंट जो है वो क्या करते हैं? डांस करते हैं आइस पे. सो ओके चिल्ड्रन, वंस अगेन वी विल रीड द एक्शन वर्ड सेंटेंसेस. मंकी स्विंग्स फ्रॉम ट्री, हॉर्सेस रन वेरी फास्ट, फिश स्विम इन द लेक, आई प्ले इन द पार्क, birds fly in the sky. Now can you make funny sentences like the one below? Funny sentence मतलब क्या? कुछ अजीब सा आपको बनाना है जिससे आपको हंसी आए. अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे. Elephants dance on ice. Elephants dance on ice. एलिफेंट कभी आइस पे डांस कर सकते हैं? आइस तो कितना कोल्ड होता है और एकदम मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है. An elephant cannot dance. A funny thing है, right? So use the following action words and make funny sentences of your own. हमें क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं ना बच्चों, उसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी कौन से? फनी. सो लेट्स सी. जंप, ईट, ड्रिंक, हीट, क्लैप. जंप, ईट, ड्रिंक, heat, clap. A. Clowns jump on a big ball. Now can you imagine इतना बड़ा big ball हो और उस पर clowns कभी jump कर सकते हैं? No, clowns jump on a big ball. So it is funny thing. The kangaroos eats a pizza. Can you find and you imagine kangaroo कभी pizza खा सकते हैं? No, the kangaroo eats a pizza. Penguins drink tea. कभी penguins टी पिए? No, penguins drink tea. The mouse hit the cat with a bat. माउस जो है उसने क्या किया? कैट को हिट किया. किससे किया? with a bat. Can you imagine? It is funny thing. Monkeys clap at the movies. monkeys जो है वो मूवी देखने गए थे थिएटर में और उन्होंने ताली बजाई, right? So can you imagine monkeys can go in the movies, in the theater to watch the movies? Can they sit on the seat properly and enjoy and see? No, they jump from here and there. So all these are what? Funny sentences. So once again we will read. Clowns jump on a big ball. The kangaroo eats a pizza. Penguins drink tea. The mouse hit the cat with a bat. Monkeys clap at the movies. So dear children, I hope you have understood this exercise. Complete this exercise in your grammar textbook with neat and clean handwriting. Thank you.